चलो, so the first question is Locke view on revolution. John Locke, in his second treatise of government, gave his concept of revolution rooted in his ideas of natural rights and limited government. For Locke, human are enlightened individuals. They enjoyed inalienable natural rights, right to life, property, and liberty, which are divinely ordained and fundamental to their existence in state of nature. ठीक है, अच्छा इंट्रोडक्शन है. Individuals formulated state on the basis of people. Individual formulated on basis of people consent or popular sovereignty to protect these three natural rights. Locke, through social contract, forms civil society and government, which are limited in governance, and people have right to revolt or restrict against the government if state fail to protect their right. देखो बेटा, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन आपने पूरा एक सेंटेंस बना दिया है. फाइन, सो नोट डाउन दिस थिंग. पूरा इतना लंबा सेंटेंस नहीं करना है. एक सेंटेंस के अंदर मतलब अच्छा यहाँ पे फुल फुल स्टॉप लगा रखा है आपने. इतना लंबा नहीं करना, फिर भी ये काफ़ी लंबा हो गया. जस्ट कीप योर सेंटेंसेस कि एक दो लाइन के अंदर ही वो आ जाए. कोशिश करो, लंबा, ज़्यादा लंबा नहीं करना है. फाइन. अदरवाइज आर्गूमेंट्स आर्गूमेंट्स आर गुड. मतलब ये इतना रेडिकल भी नहीं है, चलेगा, बट टू बी वेरी इफेक्टिव, सिंपल, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. ऐसा एक्सप्रेशन अच्छा लगता है एग्जामिनर को कि हाँ ठीक है. वैसे आर्गुमेंट इज गुड. However, there are certain limitations put by Locke to legitimize the revolution. It must be political against the arbitrary and excessive use of power by government, or if government breaches separation of power. ठीक है. Locke affirms evolution as a tool not to. Yes, sir. Can we use any example from contemporary type of हाँ, वो तो मैं बताने वाला था. वो तो बताने वाला था मैं. हाँ, ना, यू कैन राइट इट. फाइन, यू कैन राइट इट कि भाई गवर्नेंस ही खराब है. जेंजी वाला एग्जांपल दे सकते हो. अभी फिलहाल जेंजी रिवोल्यूशन हुआ नेपाल में, और ऐसे कोई कंटेम्प्रेरी व्हेन पीपल आर यू जस्ट चेंजिंग द एंटायर स्टेट. ओके, पूरे स्टेट को ही चेंज कर रहे हो आप, पूरा पावर ही चेंज कर दिया आपने. सो पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द स्टेट. तो ये तो अच्छा एग्जाम्पल है, यू कैन गिव दिस. ज़रूरी नहीं कि एग्जाम्पल बहुत ही स्टीक हो, जो आर्ग्यूमेंट से मैच कर रहा है यू राइट इट. सो यू कैन राइट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल. और सबसे अच्छी बात विच यू डिड इन दिस आंसर, अब आपने वर्ड लिमिट को प्रॉपरली एडहेयर किया. दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट, दिस आंसर. अननेसेसरी इतना नहीं, जितना पूछा गया उतना लगभग लगभग बता दिया है. ठीक है, सो दैट्स नाइस. The great and chief aim of men's uniting into commonwealth and putting themselves under government is preservation of property. Okay. अब यहाँ पे मैंने पहले डिस्कस किया था. यहाँ पे मेन डिमांड यही, नेचुरल राइट्स टू प्रॉपर्टी. Locke has been known as possessive individualist due to his unrestricted protection to right to property, which includes life, liberty and state. है बेटा, ये state नहीं, state. State. State means physical property. हाँ, ये कन्फ्यूजन मत रखना, ये कहीं मैं स्टेट बोल रहा था, नॉट स्टेट, स्टेट. Locke believed that these rights are natural, given by divine and fundamental to their existence, as individuals are rational and enlightened beings. Absence of authority in state of nature leads to creation of civil society and government. ठीक है.
Individuals creates government and civil society by formulating social contract and giving their con- consent to them, and their main function is to protect and preserve these natural rights, right to property. And if state fails to protect these rights, then people have right to resist against government. ओके लिख दो यहाँ पे कि भाई टू स्टेज सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ. पहले में हमने क्या बनाया, कॉमनवेल्थ, एंड देन वी आर मेकिंग द गवर्नमेंट. फाइन, थोड़ा सा और रिफाइन हो जाएगा. यूज कीवर्ड्स एज मच एज यू वांट टू यूज. However, critics like Klasky criticize Locke by making state a necessary evil because for Locke, state is just to ensure these natural rights. Rousseau also criticized Locke's unlimited protection to right to property because it hampers the liberty of individuals. ये ठीक किया आपने, ये dimension use करके दिखा दिया. In spite of many criticism, Locke's theory of limited government, natural rights, especially his emphasis on right to property, laid the foundation of liberalism in political science. Good answer. Locke's view on revolution. John Locke, called the father of liberalism, is a child of glorious revolution. Okay. He believed in the ideas of glorious revolution, such as limited role of monarchy, people following religion based on their belief. Okay, good. एक बात याद रखना, आप यहाँ पे दो तीन डायमेंशन लिख रहे हो. कॉल्ड द फादर ऑफ लिबरलिज्म. जॉन लॉक इज बीइंग कॉल्ड फादर ऑफ लिबरलिज्म, इज चाइल्ड ऑफ ग्लोरियस रिवोल्यूशन. इसको अलग अलग भी कर सकते हो आप. फाइन. वेर इज शी? आर यू देयर? अरे सुन रहे हो क्या? वी आर डिस्कसिंग योर आंसर. I'm sorry, sir. I just hand wash. So here what I mean to say, that you should not like write both the things in one sentence, जो थोड़ा सा मतलब हैजी सा ना हो जाए. The points are fine, good. Like John Locke is being called father of liberalism, and अब context बताओ that he he was child of glorious revolution. नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर लिख दो. ऐसे होच पोच मत करो. फाइन, कीप योर एक्सप्रेशन टू द पॉइंट एंड सिंपल. एंड ओके, कंटेक्स्ट बताया आपने, इट्स फाइन. But can you see it? यस, आई कैन सी इट. Okay. Locke believed in divine mandate and said people are born with natural rights given by God. God gave divine mandate. What do you mean by divine mandate? That people are being given the natural rights. Okay, they are enjoying rights because they are being bestowed by God on them. Since people are rational, आप यहाँ पे लॉक ही बोल रहे हो. फाइन, सो यू डोंट हैव टू ब्रिंग this abbreviation and writing log here. As per Locke, according to Locke, people are rational. They act in accordance with the natural law, enjoy their natural rights. But when rationality of humans is overpowered by the appetite, leading to amassing more property, they might violate the rights of other people. To prevent this, he formulated a social contract. This social contract contains two stages. First stage, all people are unanimously create civil society where people are sovereign. Then through the second contract, they elect a government which protects and enlarges their right. चलो, यहाँ पे अपना सारा तामझाम बता दिया है कि कैसे उसने स्टेट क्रिएट किया. फाइन. The government created through second contract is limited and has fixed tenure. Government cannot exceed their power. ये मैं कैसे, how can I minimize this? In case the government acts in a manner where Where? they try to accumulate unlimited power, or they infringe people's natural rights, then the Then people are provided with the right to to. revolt. Okay,
ठीक है. नाउ सी, you brought this dimension meaningfully, आप यहाँ तक लेके आए होगे. ओके, नाउ यू रीच्ड हियर. फाइन. अब यहाँ पे नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट राइट टू. हाँ बेटा, हेडिंग ऐसे देके मत लिखो इसको, ठीक है. आई टोल्ड यू राइट इन पैराग्राफ फॉर्मेट ओनली. फाइन. मेक इट पैराग्राफ. पैराग्राफ बनाओ उसका. सो रिमेंबर दिस थिंग, पैराग्राफ बनाना आपको. दिस इज नॉट योर जीएस आंसर. मैंने आई डिस्कस अर्लियर. फाइन. द गवर्नमेंट क्रिएटेड बाय पीपल for the preservation of their rights can be overthrown by revolution. It is a little bit repetitive. Yes, sir. Fine. Also, हाँ, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए आपके आर्गुमेंट्स की. पहले बता चुके हो आप. फाइन. इन द प्रीसीडिंग सेंटेंस यू हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस थिंग. भाई क्यों? फाइन. सो ब्रिंग दोज डायमेंशन, जो कीवर्ड्स हैं, यूज दोज. कि भाई गवर्नमेंट को उन्होंने उतने ही राइट्स सरेंडर किए हैं which are necessary to adjudicate and to make certain laws, and laws should be based on natural law, and they must not violate their natural rights. Fine. So write that dimension, and then they are giving consent to that much only because they are rational. They are rational, and whatever rights are being bestowed upon to them by God, they must enjoy that. तो उससे ज़्यादा कंसेंट नहीं देंगे. और वो मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको बताया था कि उससे ज़्यादा कंसेंट दे भी नहीं सकते हैं. दे कैन नॉट गिव दोज राइट्स विच दे डोंट हैव. दे डोंट हैव द राइट टू डिस्ट्रॉय their person. They cannot kill themselves because this body is given by God to them. Fine. So God gift, you cannot destroy it. You can enjoy it. So you can enjoy, you can enlarge, but you cannot destroy. तो भाई जो राइट आपके पास ही नहीं है, that you can destroy your life, how can you extend to the other person? Fine. So this was the concrete argument. You are giving consent to those things which you think that going to enhance your natural rights or protect and preserve them. People are sovereign. For them, government is only an authority that coordinate affairs, administrate people, and preserve people's natural rights. Okay, good argument. This authority is replaceable. Replace किस context में लिखो. Since Locke grew up in backdrop of glorious solution, he knows the importance of people rights and how they should not be constrained on people right. Okay. Significance बता दो, liberty की significance. Fine, if liberty is being taken, so they won't be able to enjoy life fully. He paved the way for liberalism, where individual rights are the utmost priority. Right revolution is the power of people which enables them to reclaim their authority on themselves. ठीक है. Good improvement. I appreciate that for you. thank you, sir. The great and chief aim of man's unity into the commonwealth, putting themselves under government, is preservation of property. Preservation of property is the main feature of Locke theory. Okay, in this context, property means life, liberty, state. According to him, these rights are natural, God given, and should be governed based on the principle of natural right. Good. But problems occurs in the governance when rational man is overpowered by passion. In order to deal with this problems, men have to unite into a commonwealth and form a government. Locke state of nature. बेटा देखो, first read the statement and find out the main demand. Fine. Main demand को identify करना है आपको. आपके पास सारा कंटेंट है. You are having enough content. This is more than sufficient. But you have to identify that this is the main demand and I have to revolve around this only. I'm not going to beyond that. डायमेंशन दूंगी, मैंने यहाँ पे दिया, ये डायमेंशन मैं बता रही हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू बियॉन्ड दैट. ओके. या फिर उस डायमेंशन को इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना है कि जो मेन डिमांड है वो बहुत ही कम हो जाए. तो राइट अबाउट नेचुरल राइट्स, राइट अबाउट यू नो what it provides to them. Find how they are going to enjoy their life fully. Significance of natural rights. Bring those dimension. And for that preservation of that only, he's creating this particular thing called state and sovereign. State of nature is state of peace. People were
content with their natural rights and having limited property. But by the introduction of money, there were no limitations with respect to storage of property or spoilage. This led to the unlimited desire for property, and this desire might make people take away rights of others. Therefore, to preserve, Locke has created social contract. Okay, fine. Now you are uh, हेडिंग मत देना, ठीक है. यू डोंट हैव टू गिव हेडिंग. आप फ्लो में जा रहे हो, so accordingly he is bringing this dimension. फाइन. या फिर टेल दैट कि भाई सीधा ऐसे लिख दो यहाँ से, इन स्टेट ऑफ नेचर, इन लोक्स आइडिया ऑफ स्टेट ऑफ नेचर. फाइन, स्टार्ट लाइक दिस. लोक सोशल कॉन्ट्रैक्ट. देखो यहाँ पे भी अपने पॉइंट लिख रखे हैं. सो यहाँ पे अगर आपको ऐसे लिखना हो, सेंटेंस के अंदर लिखना हो, तो यू कैन राइट लाइक दिस. इन Locke's theory of social contracts, he envisages two stages. First stage is related to constitution of commonwealth or civil society. Fine, then write about that. Similarly, उसके बाद in second stage write your arguments. This is how you are going to proceed. ऐसे ही एक पैराग्राफ बनाना है आपको. कंटेंट तो आपके पास में है ही. ओके. Through second contract, people created a government and gave a limited authority to it. This government must be impartial and exercise its power for preservation of people's natural rights. Through this, we understand that the chief aim of people to unite and form a government is to protect their own self-interest, to protect their rights of life, liberty, and estate. Locke is the only concerned with people's natural rights, only concerned with natural rights and preservation. Since these natural rights are God-given, they must be protected, and at all costs, they should not be infringed. अब थोड़ा सा इसके अंदर कंटेम्प्रेरी डायमेंशन लेके आ सकते हो, या फिर बता सकते हो कि कैसे ये लिबरलिज्म की फाउंडेशन बन गया. फाइन. और प्रॉपर्टी का और डायमेंशन यू कैन राइट दिस थिंग. ओके. रूसो के क्रिटिसिज्म लिख सकते थे यहाँ पे. दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लोर दिस. ऑल्दो कंटेंट इज गुड. यही है. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टीच यू इन दोज टॉपर्स कॉपी. वो सभी ऐसा ही लिखते हैं बेटा. यू थिंक दैट कि मैं कुछ परफेक्ट आंसर में लिख दूंगी, बट इट डजंट हैपन. कोई ऐसा कुछ परफेक्ट नहीं होता है. आई टोल्ड यू पीपल कि भाई 4-5 आंसर्स आपके बहुत अच्छे होंगे, 5-6 आंसर आपके एवरेज होंगे और 5-6 बिलो एवरेज होंगे, और आपका पेपर अब तैयार हो जाएगा ऐसे ही. अब इशू क्या आता है कि लाइक पीपल थिंक दैट ओ वी हैव टू राइट ऑल द आंसर परफेक्ट, और उस कभी लिखते ही नहीं है. सो वी नीड टू एक्सप्लोर दिस. और धीरे धीरे अब देखो, अब नाउ यू कैन सी जो आज लिखा है उससे जो मतलब उससे पहले जब आंसर लिखे थे, नाउ कंपेयर इट कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ. दिस इज हाउ इट हैपेंस. फाइन. You both can feel this particular thing.